Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class. I'm sure children you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourselves children. Stay happy, stay healthy and stay safe. We are doing chapter number 2, that is numbers from 1 to 10. Okay. In this chapter children we have covered different topics. What all have we done? We have done counting of numbers, counting of objects. Then we have done counting objects and writing their numbers. Okay. So objects को count किया एक collection में, फिर उनका number लिखा हमने. Then we have done recognition of numbers, मतलब numbers को identify करना. Then we have done making collection. Making collection में हमने क्या किया था कि some objects are given and a number is given. You have to make a collection according to the number given. So ये हमने किया making collection. Then we have done the number 0, the number 10. Number 0 हमने किया, number 10 किया. Then we have done number and their names. Then we have done number before any given number, number after any given number and number between any two numbers. After means बाद में, before means पहले and between मतलब बीच में. Then we did writing numbers in order. Order that is in forward counting as well as in backward counting. Numbers को order में लिखना forward counting में भी हमने किया और backward counting में भी हमने किया. ठीक है. Then we did writing numbers in ascending order and descending order. Ascending order that means writing the numbers from greater to smaller and descending order means writing the number from greatest to smallest. ठीक है. जो group of numbers जो भी दिया है ascending order में लिखना है. That means we start from the smallest number and move towards the greatest number. And if we have to write in descending order, then we start from the greatest number and move towards the smallest number. Okay. So today we will be doing activity worksheet 3. Okay. The lesson is complete. Now we will be doing activity worksheet 3, which is based on chapter number 2. So activity 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 worksheet activity worksheet 3. Okay. So turn to page number 27 in your maths book. This is your maths book, Perfect Composite Mathematics, and turn to page number 27. This is activity worksheet 3. Page number also I am writing. Page number 27. ठीक है. Activity worksheet 3. Page number is 27. Now the first question is write the missing number in each box. ठीक है. First question क्या है? Write. First is write the missing number in each box. ठीक है. Few numbers are given and few numbers are missing. मतलब missing का मतलब जो numbers नहीं है वहां पे. So you have to write those numbers. So first there is a big board and then the numbers are written. Okay. इसको इधर से साइड से भी थोड़ा सा इरेज कर दूं. 1 2 3 4 then 5 then 6
then 7, 8, 9 and 10. Okay, this is the big board. Now let us see what all numbers are written. The numbers written are 2, 5, 7 and 10. These are the numbers which are written, and all the blank boxes, that means these numbers are missing. जो blank boxes है इसका मतलब है कि ये numbers missing है. Now you have to write these missing numbers. Okay, so as you can make out, ये आप देख करके आपको समझ में आ रहा है कि here the numbers are written in forward counting. ये आपको देख के समझ में आ रहा है कि नंबर जो है वो फॉरवर्ड काउंटिंग में लिखे हुए हैं. ओके, आई होप क्लियर है सबको. 2, 5, 7, 10. That means the numbers are written in forward counting and you have to write the missing numbers. Okay, so what is the first number? यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा? The number here would be 1 only, because we start counting numbers from 1. हम काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं? वी स्टार्ट फ्रॉम 1. ओके, सो दिस इज 1, 2 इज ऑलरेडी देयर. देन नेक्स्ट, व्हाट कम्स आफ्टर 2? 2 के बाद क्या आता है? द नंबर आफ्टर 2 इज 3. द नंबर आफ्टर 2 इज 3. ओके, देन next, what is the next number? 1, 2, 3, 4. We have written 1, we have written 3, then next is 4. Okay, 4. 5 is already there. After 5 comes 6. 7 is already there. 7 के बाद क्या आता है? The number which comes after 7 is 8. ठीक है, आफ्टर 8 द नंबर आफ्टर 8 इज 9. 10 इज ऑलरेडी देयर. ओके, सो मिसिंग नंबर्स आर 1, 3, 4, 6, 8 एंड 9. दीज आर द नंबर्स विच आर मिसिंग. इनको भी हमने लिख दिया. नाउ दिस बोर्ड इज कंप्लीट. सो नाउ यू कंप्लीट दिस इन योर बुक ऑल्सो. आप अपनी बुक में इसको कंप्लीट करो. डन, सबने लिख लिया? बिकॉज आई विल हैव टू इरेज दिस. इरेज कर दूं अभी. आई होप एवरीवन हैज डन दिस. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज number. Question number 2 is some numbers are given. Here what you have to do is, some numbers are given. You have to circle all the numbers which come before 4. मतलब जो नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें से आपको जो नंबर्स 4 के पहले आते हैं उन सारे नंबर्स को आपको सर्कल करना है. ओके, so now let us see what are the numbers written. The numbers written are the numbers written are 5, 3, 1, 2 and 4. ठीक है, the question says CIRCLE, circle all the numbers which come before 4. ठीक है, बिफोर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिफोर? बिफोर मीन्स पहले. ओके, सो हियर 5, 3, 1, 2, 4.
here you have to circle the numbers which come before 4. जो 4 से पहले आते हैं आपको उन numbers को circle करना है. So which are the numbers which come before 4? Let us start with 1. Since 1 से हम counting start करते हैं, so let us start with 1. Now all the numbers, आपकी counting जब forward of counting हम करेंगे तो forward counting में जितने भी numbers जो 4 से पहले आएंगे उनको हम सर्कल करेंगे. ठीक है, जो भी नंबर 4 से पहले आते हैं दैट मीन्स दे आर बिफोर 4. 4 से पहले आ रहे हैं काउंटिंग में, मतलब वो 4 से पहले हैं. Isn't it? This is common sense only कि जो नंबर्स काउंटिंग में 4 से पहले हैं दैट मीन्स दे आर बिफोर 4. ओके, सो 1, when we count 1, 2, 3, 4. That means there are 3 numbers before 4. These are 1, 2 and 3. So we will circle 1, we will circle 2 and we will circle 3. Okay? So the numbers 1, 2 and 3. These are the numbers which come before 4. 5 comes after 4. So we will not encircle 5. We have to encircle all the numbers which come before 4. जो 4 से पहले numbers आते हैं हमें उन सारे numbers को circle करना है. Okay? Then next is question number 2 में next is circle all the number which come after 2. ये हमने before वाला किया. Now after 2. Okay? Now let us see what are the numbers that come after 2. The numbers are 5, 3, 1, 2, 4. Again same number 5, 3, 1, 2, 4. And the question says circle all the numbers. Circle all the numbers which come after 2. Again forward counting जब हम start करेंगे 1, 2. ठीक है, so the number before 2 is only, there is only one number which comes before 2. That is 1. 1 is the only number which comes before 2. उसके बाद के जितने भी नंबर हैं all the numbers they will come after 2 only. So here we have to circle the numbers that will come after 2. जो 2 के बाद जो numbers आएंगे हमें उन्हें क्या करना है, circle करना है. Okay? The question says circle all the numbers which come after 2. So 2 के बाद जितने numbers आएंगे हमें उन्हें circle करना है. Okay? So 1 तो 2 के पहले आ रहा है. So we will leave 1, then 2. Now the numbers after 2 is 3, okay, 4 and 5. So 3, 4 and 5. These are the 3 numbers that will come after 2. After 2 मतलब in given set of numbers में. We are encircling the numbers which will come after 2 out of these given numbers. ये जो given set of numbers है इसमें जो numbers 2 के बाद आ रहे हैं हम सिर्फ उन्हें ही circle कर रहे हैं. Okay? Now you do this in your book. मेरे साथ साथ आप बुक में भी करते चलोगे. Okay? So do this in your book and in case बुक में कंप्लीट नहीं हो पाता है आप सेम वीडियो को बाद में देख के भी कंप्लीट कर सकते हो. बट यू हैव टू कंप्लीट ऑल योर वर्क फ्रॉम द वीडियोज ओनली. ओके, सो मैं फिर से साइड में आ जा रही हूँ सो दैट यू कैन कंप्लीट इट. आई होप चिल्ड्रन एवरीवन हैज डन इट नाउ. सबने कर लिया पूरा. इरेज कर दो अभी मैं. नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3. ओके,
Question number 3 is write the number name. Question number 3 is write the number name, and the numbers are A is 9, B is, A is 9, B is 8, then B is 8, then C is A, B, C. C is 6, and D is 10. Okay, you have to write the number names of these numbers. Number names, we all know that number names are the spellings. ठीक है, number names क्या है? Spellings. किसी भी चीज का नेम है, whether it is name of a number, it is your name, name of anything. जब उसकी हम स्पेलिंग लिखते हैं, that is the name. ठीक है, किसी भी नेम को लिखने के लिए हमें स्पेलिंग लिखना है. So here number names means writing the spelling of the number. So this is 9, and children remember number names. Number names are proper nouns. ठीक है, these are names of specific number. Number 9 is only one. बहुत सारे 9 नहीं है, बहुत सारे numbers हैं, but 9 is only one. Each number is unique in itself. क्योंकि सारे numbers तो अलग अलग है, हर number एक बार आता है. So we always write the number name with capital letter, because number names are proper nouns. अभी इंग्लिश में जब हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे, जब नाउन्स पढ़ेंगे, तो प्रॉपर नाउन दैट मीन्स नेम ऑफ एनी पर्सन, एनी प्लेस, एनी कंट्री, जो कि कोई भी चीज जो अपने में सिर्फ एक होती है. ओके, देयर मे बी मेनी चिल्ड्रन ऑफ द सेम नेम. एक नाम के बहुत सारे बच्चे होंगे. इन योर क्लास ऑल्सो there are so many children of there are 2 Manvi, there are 2 girls, there are 3 girls named Aradhya, ठीक है, 2 boys named Ansh. So 2 boys, their names are same, but both the boys are different. दोनों अपने में यूनिक है, एक ही है. So number names are also unique, they are proper nouns, so we always write them with capital letter. So first is 9, and the number name is N-I-N-E, 9. Okay, N-I-N-E, 9. 9 number starts with N. The sound of N is N. 9. 8. E-I-G-H-T, 8. What is the sound of E? The sound of E is A. E का जो हमने फोनिक साउंड में पढ़ा था, the sound of E is A. Okay, so the number name of 8 is E-I-G-H-T, 8. Then 6. S-I-X. The sound of I is, I का sound क्या है? The sound of I is E. And the sound of S is S. तो S and I, जब S और I की sound blend हो गई, वो क्या बन गई? S और E, C. 6. And X का sound भी मैंने बताया था. The sound of X is X. आधा क और स, X. तो स, E, X. तीनों को जब हमने blend कर दिया, तो the sound becomes 6. Then number 10. T-E-N, 10. Sound of T is T, and the sound of E is A. So T और A मिला के क्या बन गया? 10. 10 and N, 10. So children, write the spellings in your book. Write the spelling. I am sure you all know the spelling. सबको 1 से 10 तक की, इनफैक्ट आगे तक की भी स्पेलिंग आती होगी, एंड 1 से 10 तक की तो आई एम श्योर सबको आती होगी. So everyone has written. इसको अभी मैं erase कर रही हूँ. Now question number 4. 4 and 5 are
based on increasing order and decreasing order. Okay, so इसे अभी erase करती हूँ. Question number 4 is write 6, 2, 3, 8, 1 in increasing order. Increasing order, that is increasing order, that is ascending order. So here you have to write 6, 2, 3, 8 and 1 in increasing order. That means writing the numbers from smaller to greater. So if we arrange the numbers on steps, okay, 5 numbers are there. So I have made 5 steps. मैंने 5 steps बनाए. ठीक है, अभी सबसे पहले 6, 2, 3, 8, 1. From which number do we start? Increasing order, that is ascending order. मतलब हमें steps में नीचे से ऊपर जाना है. ठीक है, so नीचे से ऊपर जाना, that means we have to arrange the numbers starting from the smallest number. ठीक है, so since this chapter is numbers 1 to 10, so therefore all the numbers are between 1 to 10 only. Now out of these numbers 6, 2, 3, 8, 1, which is the smallest number? सबसे smallest number इसमें कौन सा है? 1. So we will place 1 on the first step. ठीक है, of course book में तो आपको boxes में लिखने हैं 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, so 6, 2, 3, 8, 1. The smallest number is 1. So we will place 1 on the first step. After 1, the next number is, normal counting में भी 1 के बाद कौन सा number आता है? तो number 2. This is number 2. ठीक है ना? Normal counting में 1, 2. So we will place 2 on the second step. ठीक है? Then after 2 comes 3. 1, 2, 3. So we will place 3 on the third step. Then comes 4. 4 is not here. Then comes 5. 5 is also not here. Then comes 6. 6 है यहाँ पे. So we place 6 here. Then after 6 comes 7. 7 भी नहीं है यहाँ पे. And then comes 8. 7 के बाद 8 है. 8 is there. So we place 8 on the topmost stair. ठीक है, so that means 1, 2, 3, 6, 8. 1 से start किया and 8 step तक 8 तक complete करते करते you have reached the top floor. आप सबसे ऊपर आप घर की छत पे पहुंच गए. So now when we arrange the numbers 1, 2, 3, 6 and 8. Okay, 1, 2, 3, 6, 8. This is how we arrange the numbers 6, 2, 3, 8, 1 in increasing order. ठीक है, 1, 2, 3, 6, 8. Fine. Now similarly, the next question is to arrange the numbers in decreasing order. Next हमें क्या करना है? Numbers को decreasing order में arrange करना है. So first you write this, children. इसको आप अपने बुक में कंप्लीट करो and then we will do the next one, decreasing order. Increasing order ऊपर चढ़ना, decreasing order is नीचे आना. They are just opposite of each other. अभी जब ऊपर जाओगे तो नीचे भी आना जरूरी है, छत पे तो नहीं रह जाओगे. Ground floor से छत पे गए, now you have to come back also. So if you arrange these numbers in decreasing order, how will you write? अगर ये same numbers को
डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर करना है तो हाउ विल यू राइट? बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा. जो लास्ट नंबर है दैट वुड बी द फर्स्ट नंबर, देन सेकेंड लास्ट नंबर जो है नेक्स्ट, देन 3, देन 2 एंड देन 1. सो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर इज जस्ट द रिवर्स. ठीक है ना? ओके. नाउ लेट अस डू द फिफ्थ वन. फिफ्थ वन अभी करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट 4, 7, 9, 2, 8, 1. Write 4, 7, 9, 2, 8, 1 in decreasing order. ठीक है? 4, 7, 9, 2, 8, 1. You have to arrange these numbers in decreasing order. That means you have to do backward counting. ठीक है? अभी आप घर की छत पे पहुंच गए, रूफ पे पहुंच गए. Now you have to come down. Okay? And the numbers are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में we do forward counting, in decreasing order we do backward counting. Decreasing order में हम क्या करते हैं? हम backward counting करते हैं. Okay? So backward counting that means we start from 10. Backward counting में 10 से start करते हैं. That does not mean कि हम हमेशा 10 से ही start करते हैं. Here we will start from 10 because we are working with numbers from 1 to 10 only. ठीक है? हम 1 से 10 तक के जो numbers हैं हम सिर्फ उनके साथ ही वर्क कर रहे हैं. सो हियर वी स्टार्ट द बैकवर्ड काउंटिंग फ्रॉम नंबर 10. ओके? 10 से स्टार्ट किया. सो 10 इज नॉट हियर. 10 के बाद फिर 10 से पहले फिर क्या आएगा? 9 इज हियर. सो वी राइट 9 ऑन द फर्स्ट स्टेप. देन आफ्टर 9 कम्स 8. 8 इज ऑल्सो हियर. सो नेक्स्ट स्टेप पे क्या आएगा? Sorry, 8. Then after 8, अगर हम backward counting कर रहे हैं 10, 9, 8, 7. 7 is also here. 7, 6. 6 is not here. So we move on to the next number. 5. 5 is also not here. So we move on to the next number. That is 4. 4 happens to be here. 4. ठीक है? 4 के बाद then 3. 3 is not here. यहाँ पे 3 नहीं है. Then 2. 2 is here. And then 1. 1 is here. So when we arrange the numbers on steps 9, 8, 7, 4, 2, 1. Okay? Now we can arrange the numbers in descending order. Now we have already arranged 9, then 8, then 7, then 4, then 2, then 1. So जो हमें given set of numbers जो दिए हुए हैं, जो set of numbers जो हमें दिया है, उसको जब हमने descending order में किया, so it becomes 9, 8, 7, 4, 2 and 1. ठीक है? और इसी को अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? उसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा. जो लास्ट नंबर है दैट वुड बी योर फर्स्ट नंबर 1, देन 2, देन 4, देन 7, देन 8 and 9. Okay? So this is in increasing order.
but you don't have to write this. ये तो मैंने just एक ऐसे explain करने को बताया. You have to write only this. So write in your book, children. I hope everyone has written. So with this, we come to an end of this activity worksheet 3 as well as chapter number 2. Activity worksheet 3 भी हमारी complete हो गई and chapter number 2 is also completed. Okay. In the next class, so I will stop here today. In the next class, we will start with chapter number 3, that is addition, based on the numbers from 1 to 10. Okay, children. So thank you so much.